This conference will now be recorded. So today I'm explaining you the one project. This is the project one, and project one is it simply the deploy web server. Deploy Apache web server in Linux. हमें एक वेब सर्वर बनाना है लिनक्स के थ्रू. अब सिंपल सा है कि लाइक का दिस इज माय वेब सर्वर, यानी कि ये मेरा दिस इज माय लिनक्स सर्वर. तो गाइस ये मेरा क्या है, लिनक्स का इंस्टेंस है. नाउ दिस इज माय लिनक्स इंस्टेंस. And now we can deploy the website in this machine. और हमें जो अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है वो हमें इस पर्टिकुलर मशीन पे डिप्लॉय करनी है. यानी कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट होना है वो किस पर होना है, लिनक्स पर होना है. नाउ दिस इज द सिस्टम ऑफ गिट. गिट दैट मींस दिस इज अ डेवलपर सिस्टम. हियर वर्क इज डेवलपर. और डेवलपर का क्या काम है, इज राइट द कोड, राइट द वेबसाइट कोड. लाइक इसने यहाँ पे एक वेबसाइट का कोड बनाया with the name of like index index.html. Got it everyone? Ravi, is it clear? Yes, sir. Now in this system we are using the git. यहाँ पर डेवलपर के सिस्टम पे क्या एड ऑन हो रखा है, इट्स वर्किंग ना git. And now the developer write the code and developer save this code in a GitHub repository. और डेवलपर क्या करेगा, इस कोड को कहां पर सेव कर देगा, GitHub repository के अंदर. So now it's my GitHub. And developer push this code in repo. That means कि ये जो index index.html files created by the developer, ये फाइल मेरी कहां पे आके सेव हो जाएगी, GitHub. Now we are using the one Jenkins. Jenkins is provide the function is like it's pull the code and push the code. That means कि we are using the Jenkins for automation. And Jenkins क्या करेगा, it's pull the code from GitHub, then test the code, build the code, test, एंड टेस्ट करने के बाद वो क्या कर देगा, डिप्लॉय भी करा देगा. और वो डिप्लॉय कहां पे कराएगा, इस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे. एंड नाउ माय वेबसाइट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. गॉट इट द सिनेरियो? इज इट क्लियर एवरीवन? रवि? Yes, sir. So now I'm execute this project. So now we have create 3 servers, one for Git, second for Jenkins. So either I'm using the 2 servers only, I'm just creating the 2 server, I'm install the Git on a same system. Jenkins वाले पर ही मैं Git भी install करूंगा. So मैं एक ही system use कर रहा हूं, I'm not using 3. So now I'm just go login with the portal, I'm just login with Amazon. Or either choice is you can use a different, or either choice you can install a Git in a Docker container. So choice is your.
it's my VM1 is running in last class to till now. I'm just action and then I'm just go to and terminate this instance. Now the click on a launch instance. And now I'm using the Amazon Linux T2 micro. And now number of VMs I'm creating 2 VMs in number of VMs is 2. Now next, next. And now I'm just click IAM policy. Name, I'm not taking any name now. The security group, I'm select the existing security group and review and launch. And now I'm select key pair and launch instance. So guys, here I'm using the .pam extension key pair. So you can also convert the PAM extension key pair through the .ppk. How to convert the key? तो अगर आप गलती से PAM की ऐड भी कर देते हो तो आप उसको की को कन्वर्ट भी कर सकते हो. की को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा, यू कैन जस्ट सर्च इन puttygen. You can click on puttygen. So this you can see the puttygen is available. And either I'm just go to so this is a puttygen. Now load and select the PAM extension key pair. And save a private key. And now give the any name like linux linux.pam.ppk. So this is a Linux की जो PAM की है उसी को मैंने PPK में कन्वर्ट करके सेव कर लिया है. So guys, आप इसी की पेयर के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी मशीन्स को आप लॉग इन कर सकते हो. तो अगर आप गलती से PAM की पेयर भी यूज कर देते हैं तो आप उसको puttygen के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो. Now the next scenario is this is my Jenkins, जिस पर मैं Jenkins install करूंगा. I'm installing Jenkins. And now I'm execute the website in this system. So this is my web server. So first I'm install the Jenkins. So now I'm just copy the public IP of this machine and go to the putty. Then Control V and go to the parents and increase the font size. And now select the key pair. So you can just click on SSH, then click auth, then browse and select the key pair. It's .ppk extension key pair. So now I'm just convert the .ppk key pair and where in which location in a desktop, I think so. In which location I'm saved the file. Yeah, I think this is the linux.pam. And now open and now open. And now you can see I'm just login with this key. And login as is a default username of Amazon Linux is ec2-user. Refuse our key. What happened? The key is not working. Wait guys, give me a 1 minute. Give me a 1 minute. I'm using the Linux spam. This is a .ppk file. .ppk. The file name is, yeah. Now I'm again try, go to appearance and now SSH authentication. And now the EC2-USER user not support authentication method. Guys, just a minute. I'm just convert again file. I'm just check the key pair first of all. I'm using which key? I'm using, where is a key pair?
Linux. Subnet, Linux, platform detail, Unix, normal Windows-Office. I'm using this key pair, Windows-Office. Now I'm just go to Puttygen and load Linux Office. Save a private key. Are you sure you want to save the key without a password to protect it? Yes, and I'm just go to the desktop, Linux key, and now save, and now close. Let me go to Putty, paste 13.24.0.0.0. Authentication. कमाल है की काम नहीं कर रही है रिफ्यूज हो रही है बार बार की what happened why the key is not working 1 minute guys कमाल है यार oh wait it's using the RS okay 1 minute यार एक्चुअली क्या है ना आपका यहाँ पर सेटिंग्स ना कुछ चेंज हुई हैं वहाँ पर अमेजोन की कीज में शिट यार की नहीं ले रहा है की एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा गाइस आई एम अगेन क्रिएट one more machine fine so I'm just delete this one option so now I'm just go to actions and then terminate and now I'm create a one more machine in launch instance and then select then next next give the name of Jenkins server now next configure security and now I'm select the existing security group and review and launch and now I'm select the Linux Office key pair. The key type is RSA. So now I'm creating the new web servers and this is my web server. So same scenario. So now I'm creating the one this systems. And second I'm created this system. Now this is my Git. In this Git we have just created one repository. So now I'm just login with my Git account. github.com and now this is my account. I'm create a new repository
because my user saved the here. So now I'm just like the git hyphen git hyphen jenkin Jenkins project 1 1. And now I'm create a public repository and create a repository. Also, we require the token for this repository, because if you can connect this repository with a Git, so you require a token. So now the how to generate token, you can just go to here and then go to the settings, or inside the second you can just go to the developer settings, and inside the developer you can see the personal token access. Now revoke all, type username and confirm the. So now the password is, and now the generate a new token, give the name of like get repo, and for 30 days, or either choice is your, you can just using the 90 days. Or now I'm just give the everything on this token, because if you are not provide, you can don't use this token access, so your repository is not connected with users. So now I'm give the full access to this and I generate the token. So this is my token. I'm save this token, open in notepad, and like control V, and now file and save as, give the name of in a desktop git repo token, and now I'm saved. So now I'm create one repository in this git repository. Now I'm just log in with this server in Jenkins server, and I'm copy, then click, then paste, then go to the appearance, increase the font size, and now just I'm go to the SSH, browse, and now I'm select keep here for the Linux office, and now open, now yes, and then ec2 hyphen user. So now it's working like sudo space su space hyphen, and now first yum update -y, and now you can install a Jenkins. The last class I'm also installed the Jenkins. That today I'm again install the Jenkins. So you can use the credentials of the Jenkins, how to install Jenkins. So first you just create a file. So I'm just using download this package, EPL package. So now just right click and then enter. After that I'm just go to the inside this repository, EPL repository. I'm just click and go to then this inside this EPL, and now we can just add this code, add the following code is the repository locations. Add this code, I for insert, and now escape :wq, escape :w, and save this file. After that you can just type sudo yum install daemonize, when this package is installed, then you can install sudo, you can just download, you can install sudo yum install java. So first you can install the Java. Before installing the Jenkins, you can install the Java. So first time install the Java in the system. After that we can install the Jenkins. So first we have download the Jenkins package, so using the command of wget. So but before downloading, run this command, you can run this command, the yum-y install wget. So the already wget installed in this machine, so that's why I'm directly download this repository. And now you can also use this one, the key for like a repository mismatch, if there's an original path or not. And now you can install the Jenkins, the sudo
yum install the Jenkins, and now I'm just click and you can see that my Jenkins installation is begin start. It download the packages, the size is 60 MB, 69 MB. Or after that, you can just restart the service. So now this is the one command, the sudo service Jenkins start. This is a for old version. But if you are using the latest version of Linux, so you can using the systemctl command. So now you're using this command, systemctl start Jenkins services. Now just copy. And now we can just start the Jenkins services. So now I'm installed the Jenkins. You can also install the Git in this machine. So guys, मैं Git भी इसी systems पे install कर रहा हूँ. So now the how to install Git is you know very well the yum instll install Git. So I'm also installed the Git in this system. So this single system work, Git and Jenkins both are working in this system. So now you need a password of the Jenkins. You can generate the password through this command. You can just copy this command and you can generate the Jenkins password. And this is the Jenkins password. So now how to access the Jenkins server? You can just copy the Jenkins IP and then go to the here and now just IP and then colon 8080 is the default port number of the Jenkins. So now your Jenkins is working. Now you can just copy this password and paste in here and now continue. You can install the selected plugins. So now I'm just suggested plugins. I'm select this and now these plugins are installed, begin start for installation. So got it guys, how to install Jenkins? Ravi, is it clear? Pragya, is it clear? Now, so first I'm just done this systems in a Jenkins. In the Jenkins, I'm also installed the this part. So now I'm also installed the Git in this systems. After that, now I'm write the one code. I'm write the one code in Jenkins. So guys, simply in a Git. So I'm just come to this machine and clear, and you can see like I'm write the code. I'm just simply write the code is like mkdir and like web rep or repo. First I'm create a one repo, then go to the cd web repo, then git init for this repo initialize. We have initialized this repository with git. Then we have just create git config, git hyphen config global user dot name. Suppose karo the developer name is called Gautam. Wait, git config. Wait, git. What? Wait. Yeah, what is the command, guys? Ravi, what is the command?
Hello guys, I'm audible. Yes, sir. Okay. Wait guys. So just a minute. So I'm create this repository right now. Or what is the command of the how to add user ID and password? So guys, what is the command? Anyone explain me the command? How to set username and password? Get. I'm again login with this machine because of my internet connection is disconnect. So simply I'm just go to the portal. Again, copy the public IP. Go to putty. Easy to have an image. This is a get location now clear. After clear, like a get config hyphen global user user dot name is between inverted comma. The username is Gautam. So what happened? CONF5G. तो क्या सिंपल सा मैं आपसे ये कमांड पूछ रहा था, आप में से कोई भी कमांड नहीं बता रहा. दैट मीन्स आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार. तो यूजर ईमेल is gautam@gmail.com and now enter. Now I'm create a one web page. So like I'm just go to VIM, I'm just with the TOUCH touch INDEX index.html and now vim index.html and type the web server web commands. I for insert WELCOME welcome to my ICCP Infotech YouTube channel. Please join and subscribe. So now I'm asking key. This is my web page. Now escape colon W and Q and now save. Now you can see the content of this file. You can using the cat command cat index.html. So this is the content of this file. Now you can just commit this code. So just simply get status. So you can see this file is available. Then you can just get add. So this is available is running is a working space. You can add in a staging area. You can just get add and dot used for the all file, or if you are the single file, you can just put the name. So now if you can check the again get status, you can see that this time the file is showing green color. Now get commit -m, or I'm just give the comment like my web file and now enter. And now I'm just push this file in a repository. But before push this file, you can just connect the repository with this
developer systems. So now how to connect? This is a link, this is a command, get remote add and repository URL. So I'm just copy this URL. If this URL not shown in this location, you can go to the any repository and you can just copy this URL. This is a command, the get remote add origin. So now I'm just type this command. Then my repository is also connected. Then I'm push this repository, push this code. So like git push -u origin main. Yeah, you can type the master. You can choose any command. So like I'm using get push -u origin master or main. You can type any command or you can give the any specific repository. It's at the git username. The username is ICCP India. It's give you the password. So in a 12 August, before 12 August, you are using the password of the Git account. But now at this time, you are using the concept of token. Got it? So you are using the concept of token. So now I'm using the token of this particular system. So I'm save the token. So this is a Git repository token. I'm just copy this token and paste here. So I think so I'm just pasting 2 times for these tokens. So it's not display you. So I'm just right click and then enter. And you can see at this time your file is come to your repository. Now I'm refresh this repository and you can see the index.html file is coming. And now you can see the welcome to my ICCP Infotech YouTube channel. Please join. So guys, I'm just developer write the code and it push the code in a repository. So this is the work of Git. So मेरा जो work था like यहाँ से यहाँ तक का वो पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है कि डेवलपर ने एक कोड राइट करा और उसने उस कोड को कहाँ पे पुश कर दिया इस रेपोजिटरी के अंदर। और ये वाला पार्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में कवर करा था जब गिट करा था। रवि, इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ जस्ट वी हैव स्टार्ट द सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पर। तो गाइस इस वाले पार्ट के अंदर वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द जेंकिंस। हमने यहाँ पे क्या इंस्टॉल कर लिया है? जेंकिंस। सो यू कैन सी कि मेरा जेंकिन कंप्लीट हो चुका होगा। नाउ द एरर बिकॉज द इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सो आई एम जस्ट रिफ्रेश। So now that my Jenkins is done, I'm just give the username or password of Jenkins. And my Jenkins is also up to date. Now the first point is coming is an important part. The first you can install the plugins. Like कि सबसे पहले आता है कि हमें इस Jenkins के साथ अपना सर्वर जिस सर्वर पे हम डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं वो सर्वर कनेक्ट कराना है। तो नाउ अगर आप इस सर्वर को Jenkins के साथ कनेक्ट कराना चाहते हैं तो यू कैन इंस्टॉल द प्लगइन्स। आपको एक Jenkins पे प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड दिस प्लगइन्स कॉल नेम इज पब्लिश ओवर SSH। तो मैं इसकी जो कनेक्टिविटी है लिनक्स की SSH के थ्रू करना चाहता हूं। तो नाउ आई एम यूजिंग द प्लगइन्स पब्लिश ओवर SSH। तो पहले मैं प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद ही मेरा क्या होगा, ये सर्वर्स को मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। So now how to install a plugins? You can just go to the Jenkins and just click on a manage Jenkins. And inside the manage Jenkins, you can see the option is available plugins. Manage plugins. These are the available softwares. Now you can search publish
over SSH. So these are the plugins. Install without restart and download now and install after restart. The choice is yours. I'm just using the install without a restart. And this plugin is installed in my system. After that, I'm just add this server with Jenkins. So how to add server with the Jenkins is simply way you can just go to the again in a dashboard and then go to the manage Jenkins. Or inside the manage Jenkins, you can see option is available configure systems. Now you can just click on the configure system. The end of the system that the option is available is publish over SSH. Guys, this option is coming after install the plugins. तो जो भी plugins आप इंस्टॉल करोगे उनकी जो लोकेशंस आएगी वो आपकी कॉन्फ़िगर सिस्टम्स के अंदर आपको डिस्प्ले होगी. नाउ यू कैन जस्ट ऐड द सर्वर. जिस भी सर्वर पे मेरे को डिप्लॉयमेंट करना है, इधर आप 100 सर्वर्स 200 सर्वर्स कर रहे हैं, so I'm just click on add. The name of server, so I'm just give the like a web server server. Host name, you can put the host name the server public IP. So now where's my web server? This is my web server. And this is the public IP of this web server. I'm just copy this web server public IP. And add the web server public IP. The username was EC2-user. This web server default username is EC2. And now you can click on advanced and use the password authentication. Or after password authentication, it gives you the option of key. So if you remember, I'm using the .pem key in a web server. So now I'm just go to the PEM key. Double click and I'm just copy this entire copy. तो ये जो की है मैंने PEM की है उस पर डबल क्लिक करा तो आपकी ये की डिस्प्ले हो जाएगी. I'm just copy this key and paste in here. मैंने वहां से उस की को करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया. पेस्ट करने के बाद you can just first you can test the configuration. If your the configuration is success, then you can save the this point. So now the my server is connected my Jenkins. Now we have just create a project. So guys, I'm एक project create कर रहा हूँ. The project is called my website. So is it just simply I'm just go to the new items and I'm just click on a project like a get project 1. And now I'm just create a freshly project. And now okay. In this project, you can see the first option, you can put the any descriptions. Now I'm just explain you the source code management. That means your code is available in which location? GitHub. So you can select the Git and copy the Git repository URL. So I'm just go to the code or this is the repository URL. I'm copy this repository URL because I'm just connect this repository with my Git project. So now I'm just paste. Then I'm just go to here. This is the poll SCCM. The poll SCCM का मतलब है this is a scheduling कि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली हो या मैनुअली हो. तो मैं नहीं चाहता मैनुअली प्रोसेस हो. मैं चाहता हूं कि अगर डेवलपर कोई भी चेंज करता है तो वो ऑटोमेटिकली टेस्ट बिल्ड और एवरीथिंग हो जाए. अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करिए, तो आपको हर बार मैनुअली बिल्ड करना पड़ेगा. बट मैं हर बार मैनुअली बिल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं चाहता. So now I'm set here. Star
1 star 2 star 3 star 4 star 5. That means every minute, every hour, every day, every month, every week. Got it the point? Now the next is post build action. I'm just go to post build actions, or inside the post build action I'm just select the wait, no, I'm just go to, yeah, post build as send public, send build artifact over SSH. And now this is my web server. जो web server मैंने add करा था, you can see this web server. The source file, you know, the source file name is index index.html. This is my source file name. And now you can just execute the sum command. You can just execute the sum command. The first command is sudo yum update -y. तो सबसे पहले जेंकिन क्या करेगा, वेब सर्वर पे यम सर्वर को अपडेट करेगा. सेकंड, sudo yum install httpd -y. देन ये क्या करेगा, वहां पर अपाची वेब सर्विस को इंस्टॉल करेगा. देन sudo mv star /var /www और /html पे, और जो भी फाइल मेरी गिटहब से आएगी index.html, उस वाली फाइल को कहां पर मूव कर देगा, var www.html लोकेशन पे. एंड नाउ system systemctl restart restart httpd, और देन उसके बाद sudo क्या करेगा, मेरी जो सर्विस है, वेब सर्वर की सर्विसेज है, systemctl restart httpd, उस सर्विस को रिस्टार्ट कर देगा. एंड नाउ आई एम जस्ट सेव दिस कमांड. I'm check the sudo yum update -y, sudo yum install httpd -y, sudo mv star का मतलब है एनी फाइल, या मैं यहाँ पे पर्टिकुलर index.html भी नाम दे सकता हूँ, var www.html. and now sudo systemctl restart httpd and now save. आफ्टर दैट देखिए गाइस, यहाँ पे कोई भी बिल्ड एक्शन मेरा नहीं चल रहा है, देयर इज नो एनी बिल्ड एक्शन रनिंग. तो मैंने बिल्ड पे क्लिक भी नहीं करा है, क्योंकि मैंने वहां पे ऑटोमेशन डाला हुआ है. तो अगर मैंने वहां पे ऑटोमेशन डाला है, तो यू कैन सी द विद इन अ मिनट द मेरा बिल्ड स्टार्ट ऑटोमेटिकली. और देखिए यहाँ पे पेंडिंग आ गया है एक लिखा हुआ. दैट मीन्स कि यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है. दैट मीन्स कि वो जो सारा एक्शन, और दिस इज 100% सक्सेसफुल. नाउ यू कैन सी कि अब मैं अगर वेब सर्वर, अपना वेब सर्वर का आईपी लेता हूं और इसको ब्राउजर के अंदर पेस्ट करता हूं, यू कैन सी कि मेरी जो वेबसाइट है ना, वो ओपन होके आ जाएगी. वेलकम टू माय आईसीसी पेनफोटेक यूट्यूब चैनल. नाउ अब यू कैन सी कि मैं दोबारा से अपने डेवलपर वाले सिस्टम पे जाता हूं, गिट पे, और मैं सिर्फ वहां फाइल के अंदर एक चेंजेस करूंगा. अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, नथिंग. सो आई एम जस्ट गो टू, this is my repo. Now I'm just adding vim index.html, and now I'm just edit I for insert welcome to INDIA India web server. मैंने ये वेबसाइट चेंज कर दी. escape :wq. after that git add dot git commit -m like change file. Then git push -u
ओरिजिन मास्टर, डेवलपर ने अपना काम करा, ICCP North India, and I'm put the token. I'm just copy this token. एंड मैंने इस फाइल को पुश कर दिया अपनी रेपोसिटरी के अंदर. यू कैन सी कि मेरी नई फाइल यहां पर आ चुकी है और उस नई फाइल के अंदर मेरा नया कोड आ चुका होगा. वेलकम टू माई इंडिया. अब देखिए जेंकिन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरे कोड के अंदर कुछ भी चेंज है, जेंकिन ऑटोमेटिकली वहां से क्या करेगा, इस कोड को पुल करेगा और बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा. तो यू कैन सी कि यहां पर अभी एक ही बिल्ड है, सेकंड बिल्ड आप देखना ऑटोमेटिकली यहां पे स्टार्ट हो जाएगा. रवि गॉट इट माय पॉइंट, मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं. हाँ अब सर. मैंने अब जेंकिन पे कोई भी काम नहीं करा है क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा का सारा सेटअप कर चुका हूं. तो यू कैन सी द विद इन अ मिनट द ऑटोमेटिकली मेरी जो न्यू ट्रिगर्ड है बिल्ड प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जैसे मेरी न्यू चेंजेस आएंगे. ये देखिए सेकंड हो गया अपने आप स्टार्ट, मैंने कुछ भी नहीं करा और ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ रिफ्रेश करना, आपकी नई वेबसाइट वहां पे आ जाएगी. This is 100% done and now you can refresh it. Welcome to my India web server. So this is the process of the Jenkins that is automatically built, it is automatically deploy. अब डेवलपर को अपना काम करना है और डायरेक्ट क्लाइंट के एंड पे वो क्या होता रहेगा, लाइव अपडेट होता रहेगा. तो जो मैनुअल अपडेट करने का था ना कि मैनुअली टेस्ट करना है, मैनुअली अपडेट करनी है, वो सारा प्रोसेस ही खत्म. डेवलपर को सिर्फ अपना कोड राइट करके कहां पे रखना है, वहां से जेंकिन अपना काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा. Got it this point, Ravi? You understand the concept of the Jenkins? यस सर. ऐसे ही सेम डॉकर में भी हो जाएगा. करेंगे ना वन बाय वन. दिस इज अ प्रोजेक्ट 1. अभी ये मैंने बताया आपको क्लाउड के सिस्टम पे. जब हम कंटेनर पे कैसे करना है वो भी हम आगे चलेंगे, वन बाय वन चलेंगे ना. ठीक है. या भी करूं, अभी मैंने आपको ये बताया क्योंकि आगे मैं अभी आपको मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एड ऑन करूंगा. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी चीजें हमने पढ़ी है ना वो आगे एक साथ मर्ज होगी. तो अभी मैंने आपको एक नॉर्मल क्लाउड के सर्वर पे बनाया है, आइदर ये फिजिकल और वर्चुअल भी हो सकता है, बट अगर आप कंटेनर पे भी बनाना चाहते हो तो इट्स आल्सो पॉसिबल, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कवर करेंगे. ठीक है सर. तो इनफ फॉर टुडे. दिस इज अ वेरी इजी लैब, वेरी इजी प्रोजेक्ट, आप इजीली कर सकते हो. गिट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोड को किस तरीके से आप गिट हब के अंदर पुश करोगे ये आपको पता है ऑलरेडी. हाउ टू इंस्टॉल जेंकिन ऑलरेडी मैं यस्टरडे क्लास में ही बता चुका था, आज भी मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दिया है. टुडे वी हैव ऐड द पब्लिश ओवर एसएसएच, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करा है, उसके थ्रू हम कैसे अपने सर्वर्स ऐड करेंगे वो सर्वर मैंने ऐड करा है, और देन कैसे हम प्रोजेक्ट अपनी गिटहब रिपोजिटरी को ऐड ऑन करेंगे, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं. तो थैंक यू गाइस, आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे.